Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Amit Goyal. नमस्कार, मार्केट मंत्र कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के अंक में देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ शेयर बाजार की हलचल पर एक नजर डालेंगे और चर्चा करेंगे। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की आर्थिक सुर्खियों में, तो अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ अर्जुन। Benchmark domestic indices rebound from the day's low. Sensex gains 410 points. Nifty closes above 24,700. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar holds talks with German Foreign Minister Johann David. Highlights potential to double bilateral trade, and 56th meeting of the GST Council begins in New Delhi. आर्थिक सुर्खियों में घरेलू शेयर सूचकांकों में अंतिम कारोबारी सत्र में मजबूती, सेंसेक्स में 410 अंक की बढ़त, निफ्टी 24,700 से ऊपर दर्ज। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान डेविड वडेफुल के साथ आपसी व्यापार दोगुना तक पहुंचाने पर विचार किया और नई दिल्ली में जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक शुरू। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं शेयर बाजार पर। घरेलू शेयर सूचकांकों में आज अंतिम सत्र में खरीदारी के समर्थन से 0.5% से अधिक की तेजी दर्ज हुई। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.5% की बढ़त से 410 अंक उछलकर 80,568 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.6% की मजबूती से 135 अंक बढ़कर 24,715 के स्तर पर बंद हुआ। बीएसई मिड कैप सूचकांक में 0.6% और स्मॉल कैप सूचकांक में 0.9% की बढ़त दर्ज हुई। Benchmark domestic equity indices rose over 0.5% today. The markets had opened on a flat note and remained largely range-bound during intraday trade. However, both the indices secured remarkable gains during the last hour of trade. The Sensex gained 410 points to close at 80,568. Similarly, Nifty climbed 135 points to settle at 24,715. The broader market indices at the Bombay Stock Exchange also ended with gains. The mid-cap index advanced over 0.6% and the small-cap index added 0.9%. सेंसेक्स पैक में वाले शेयरों में 30 में से 21 कंपनियों में आज बढ़त दर्ज हुई। मजबूती वाले शेयरों में टाटा स्टील लगभग 6%, टाइटेन 1.7% और महिंद्रा एंड महिंद्रा 1.6% प्रमुख रहे। गिरावट वाले शेयरों में इन्फोसिस 1.2%, एनटीपीसी और हिंदुस्तान यूनिलीवर 0.5% की गिरावट से बंद हुए। In the sectoral indices at the Bombay Stock Exchange, 16 out of the 21 sectors logged gains. In the top gainers, metal outperformed, surging over 3%. Commodities rose more than 1.5% and healthcare added 1.2%. Among the top laggards, focused IT dipped 0.7%, IT dropped around 0.6% and tech lost over 0.5%. अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 8 पैसे बढ़कर 88.7 रुपये पर बंद हुआ। डॉलर इंडेक्स 98.3 के स्तर पर दर्ज हुआ। और कार्यक्रम में हमारे साथ चर्चा करने के लिए ऑनलाइन मौजूद हैं वरिष्ठ आर्थिक विश्लेषक पुनीत जैन। पुनीत, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद अमित। पुनीत, बाजार की दशा पे फौरी तौर पे एक विश्लेषक के तौर पे क्या कहेंगे? बाजार कहीं अंतिम क्षणों में जो रुख बदल रहा है, ये क्या दर्शाता है? क्या निवेशक बाजार से आशान्वित हैं, उत्साह भी उनमें बना हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ संकेत या कुछ चिंताएं बढ़ी हुई हैं, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है? क्योंकि अगर पिछले 1-2 दिनों की बात देखें तो अंतिम क्षणों में ही रुख बदल जाता है। अमित, देखिए, यदि अगर हम पिछले 4 सत्रों की बात देखें तो बाजार में काफी गिरावट आई थी, काफी सेलिंग थी। खासतौर से मैं कहूंगा कि जो टैरिफ्स और जो इंटरनेशनल ट्रेड को लेकर चिंताएं रही हैं और पर्टिकुलरली जो भारत के ऊपर उसका असर है, तो उसको लेकर इन्वेस्टर्स थोड़े परेशान थे। और कुछ हद तक हमने देखा था कि जो रूपी और डॉलर का रेट है वो भी करीब कमजोर हुआ था। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टर्स की काफी सेलिंग थी।
मुझे लगता है कि आज वैल्यू बेस्ड बाइंग हुई है बाजार में। शुरुआती दौर में बाजार थोड़ा नर्वस था, थोड़ी हम देख रहे थे वॉलेटिलिटी थी, लेकिन जैसे ही बाजार में हमने देखा वैल्यू इमर्ज हुई, वहां पर काफी अच्छी बाइंग हुई। कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूं कि जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं और जो घरेलू जो हमारे आर्थिक इंडिकेटर्स हैं, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, वो काफी पॉजिटिव हैं। जीडीपी का डेटा लास्ट वीक आया था, बहुत पॉजिटिव था, उम्मीद से बहुत बेहतर था। तो मुझे लगता है कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो नीचे स्तर पर वैल्यू बाइंग करने में काफी इंटरेस्टेड है और आज के बाजार ने उसी को कंफर्म किया। Puneet, what is the impact of the GST Council meeting right now, which will conclude tomorrow? What is your view on GST rationalization when it comes to the auto industry, especially electric vehicles and fast-moving consumer goods? Do you see the meeting right now as one of the reasons why we saw movement in Nifty Auto and FMCG, which actually went up? So, Arjun, actually, markets have been very positive about the reforms in GST which are proposed. We are looking at other economic reforms also, of course, ease of doing business in terms of compliances vis-a-vis GST. We are looking at rationalization of rates where everyday consumption items, they become cheaper because of the lower GST rate. There is this expectation that GST slabs will be reduced from 4 to 2, and a lot of goods of daily consumption, particularly for the middle class, they will be moved to a lower slab, which is 5% or 12%. So clearly, from 12% to 5%. So clearly, I think the emphasis in these reforms is to boost consumption. We know that there has been some slack in sales of smaller cars, so there could be a relief vis-a-vis automobiles. There could be relief for smaller cars for consumers. So I think the whole range of goods meant for consumption by the middle classes, they're likely to become cheaper tomorrow after these proposals. So I think to that extent, markets are also hopeful. Consumers, of course, are expecting this cut so that they can buy more. So and I think businesses are looking at it as a major reform in terms of compliances. पुनीत, आपने अभी जिक्र किया कि वैल्यू बाइंग हो रही है इस समय। क्या माना जाए कि जो वैल्यूएशंस हैं वो चूंकि हाल की गिरावट के बाद इतनी थोड़ी सी अट्रैक्टिव हो गई हैं, जहां पे निवेशक इस समय बाजार में सीधे तौर पे उतर सकते हैं, या बहुत सारे ऐसे शेयर जो शायद निवेशकों की पहुंच से बाहर थे, अब उनकी कीमतें इतनी आकर्षक हैं कि उनको सहज रूप से लेना कहीं न कहीं एक उत्साह जगा रहा है और उम्मीदें जगा रहा है। इसकी वजह से शेयर बाजार में जो अंतिम क्षणों में जो खरीदारी हुई है, और दूसरा, ये खरीदारी का दौर क्या अल्पकालिक है या अभी इसको आगे बढ़ना इसका लगभग संभव लगता है? अमित, देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि यदि हम पिछले एक वर्ष को देखें तो भारत के जो शेयर बाजार हैं या जो हेडलाइन इंडिसेस हैं, उसमें कोई बड़ा फेर बदल नहीं आया है। अगर मैं पिछले साल से उसको कंपेयर करूं तो करीब 3% हम बाजार जो इंडेक्स है, निफ्टी का इंडेक्स है, निफ्टी 50 का, वो 3% नीचे है पिछले साल से। सो क्लियरली ये बात साफ है कि जो भारतीय बाजार पिछले साल बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे इंडेक्स, उसमें थोड़ी रुकावट आई है। पिछले एक साल में कंसोलिडेशन हुआ है। और इसी दौरान अगर हम बाकी एशियाई बाजार देखें, पर्टिकुलरली चाइना का बाजार देखें, जिससे हमें काफी तुलना होती है भारत की, चाइना के बाजार में 60 से 70% इंडेक्स में तेजी आई है पिछले एक साल में। सो जो FII, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स को लगता था कि भारत में बहुत कीमतें ज्यादा हैं और चाइना में या दूसरी मार्केट्स में सस्ती हैं, कोरिया की मार्केट फॉर एग्जांपल, वहां पर बहुत कीमतें सस्ती थी, तो वहां पर बाजार में पिछले एक साल में हमने देखा कि फॉरेन इन्वेस्टर्स ने पैसा भारत से निकालकर चाइना में या कोरिया में इन्वेस्ट किया। पर मुझे लगता है कि जो अब अगर हम देखते हैं, जो प्रेजेंट बैलेंस ऑफ वैल्यूएशंस है बिटवीन इंडिया एंड अदर इमर्जिंग मार्केट्स, अब कुछ हद तक उसमें बराबरी आ गई है। तो मुझे लगता है कि वहां हम अब भारत में वैल्यू बाइंग हो सकती है बाय FIIs also. Puneet, one final question, since you've already answered on two sectors, including fast-moving consumer goods and auto.
metal index went up by 3% today on government policy regarding reallocation of non-operative iron ore mines. Also, if you look at the steel sector, or for that matter, the metal sector itself, they have been impacted by the tariff policy of the United States. They're looking for alternative export markets as well. So we saw a bump today. Could you tell us what is its short to medium term view on this particular sector, briefly? So, Arjun, in fact, in metal sector, there has been major churning going on because there was some hit from exports. Also, there was some dumping of goods from other countries. So I think government has taken many policy steps to restore that balance. I'm expecting the steel sector particularly to do very well because of domestic demand. And I think the export market is also widening. So, yes, I'm very hopeful that given the present valuations, the metal sector and steel in particular should do well. पुनीत, हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. धन्यवाद. और कार्यक्रम के सिलसिले को जारी रखेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले लेते हैं कमर्शियल ब्रेक. Welcome back to Market Mantra. We're now joined by economic analyst Sushma Ramchandran. Sushma ji, good to have you on the program once again. Thank you, Arjun. So there's been discussion regarding the market and especially the impact of the GST Council meeting which is taking place right now. We cannot speculate in terms of what the slabs are going to be. There is obviously some opinion being expressed in terms of whether the slabs would be 4 to 2 and there would be a third slab for luxury goods or sin goods as they are called. But clearly the decision making would take place tomorrow. Right now the meeting is being conducted and we've seen that at least 2 sectors have been impacted by what's going to happen tomorrow when the decision is taken. There is also what's happening between the trade bodies in India and the trade bodies in the US for that matter. Right now we have had trade pacts with Mauritius, Australia, EFTA, United Kingdom and the United Arab Emirates. We've had 5 meetings with US trade representatives as well before. And this came to a abrupt end when the US government announced a 50% tariff announcement on Indian imports into the US. Now a 6th meeting is also expected. So how do you see the economy right now responding to what's happening in the US and the companies, because a lot of buying into these stocks because they belong to specific industries. How do you see the valuations being affected? Do you see this being sorted out with the US? And more importantly, the GST rationalization, do you see that also as a response to what's happening between India and the US? Yes, of course. What's happening on the GST front is a major reform. I mean, if you have been following the progress of GST, and I think we all have, the fact is that it was supposed to be a single point levy. Now, it had never turned out to be a single point levy, but in a country with the kind of complexity that we have in taxation, the very fact that we were able to compress all these taxes into these 4 slabs and into these various types of GST, because we don't just have one, we have intra-GST, we have inter-GST for states, for union territories, central GST. So we have a multiplicity of levels in the tax, but still it was a huge reduction from what it was. So it was a huge simplification at that time. But now, of course, I think it's been, it's now 8 years, and it is the right time for this reform. And yes, you have rightly pointed out that, obviously this is in response to the kind of crisis that is being faced in relation to the United States, the trade issues that we're facing, the tariff issues. And there's a feeling that we need to reform, we need to bring about much greater ease of doing business. And this is one of those factors that if we make the GST much more simple, make it easy to work, it will not only, of course, ease the process of doing business, it is going to be disinflationary, it's going to spike consumption, and that's one of the things that everyone is looking forward to, spike in consumption. Industry is looking forward to it, consumers are looking forward to it, and you mentioned some of the areas already. We are talking about FMCG, we're talking about automobiles. So now whatever the GST Council does decide,
there is going to be some rationalization. We are aware of it. We are also aware of the fact that states are concerned about the reduction in revenues that is going to come about, because there is going to be some reduction in revenues. And some of the states have made assessments that it's going to be about ranging from 4,000 to 5,000 crores. And they want the compensation, and that is why the GST Council is going to have to deliberate in great detail about this. But we are moving towards this. Of course, there's another big reform that needs to be done of GST, and that is to bring both alcohol and petroleum products into the purview of this tax. That would really complete it. But for the time being, I think we should be really happy that there is going to be this reduction of rates. और इससे पहले मैं अपने सभी श्रोताओं को बता दूं कि नई दिल्ली में आज जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में शुरू हुई। परिषद द्वारा देश में अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों पर मंथन होगा, जिससे कर दरों को युक्तिसंगत और अनुपालन सरल किया जा सकेगा। सुषमा, बहुत संक्षेप में आपने काफी सारी चीजों पे तो वैसे बताया, लेकिन एक आम उपभोक्ता की नजर से और एक आम व्यापारी की नजर से अगर मैं आपसे जानना चाहूं, क्या जब शुरुआत में जब हम वैट से जीएसटी के रिजीम में आए थे तो बहुत सारी चीजें सरल हुई थी, लेकिन क्या आज की स्थिति में अब वापस से ऐसा हो गया है कि जीएसटी में बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी हो गई है, जिसको सरल बनाने के प्रति सरकार भी गंभीर है और राज्यों के साथ साथ केंद्र भी गंभीर है? नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, कम्प्लेक्सिटी आ गई है। अब मेरे ख्याल कम्प्लेक्सिटी आ नहीं गई, कम्प्लेक्सिटी शुरुआत से ही थी, लेकिन जिस कम्प्लेक्सिटी से हम वहां जीएसटी पे पहुंचे उससे हमें बहुत राहत मिली थी। अब हमें लग रहा है कि ये भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। एक बहुत बड़ी चीज है कि इसमें जो इंस्पेक्टर राज जो कहते हैं वो भी अभी लगा हुआ। जीएसटी काउंसिल में जो पेनल्टी ऑफेंडर्स के ऊपर होती है कि भाई आपने हमें ये अपना बताया नहीं कि आपने टैक्स दिया है कि नहीं, आपका इनपुट क्रेडिट की जो डेटा है वो आपने दिया है, पेनल्टी के साथ साथ गिरफ्तारी का भी डर होता है। हाँ, तो ये जो ओवर जेलसनेस है जीएसटी इंस्पेक्टर्स के, उसके बारे में भी हमें कुछ करना पड़ेगा और उसके बारे में मेरे ख्याल सरकार काफी इसके बारे में कॉन्शियस है और वो चाहती है कि ये भी थोड़ा सा काबू में ले। जीएसटी की ही ब्यूरोक्रेसी बन गई है, तो ये रेड टेप भी बहुत कम करना है। Well, moving on to that theme, from markets to trade, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar and German Foreign Minister Johann David held a productive discussion on the India-Germany cooperation and the relationship with the EU in New Delhi today. The two sides exchanged views on political cooperation, security, defense, climate, future technologies, and people-to-people exchanges. Addressing a joint press conference with his German counterpart, Dr. Jaishankar highlighted that bilateral trade between India and Germany reached nearly 50 billion euros last year. 3. Our two-way trade last year was almost 50 billion euros. Minister Wadapul is on record. I saw one of his interviews where he said that he was very confident we will be doubling our trade. Let me assure that India fully reciprocates that sentiment. It looks forward to work with the German government. And last year, I recall, we had a very successful conference in Delhi of APK, the German Industry Association. And I want to reiterate that we remain fully committed to continuously improving the ease of doing business in this country. Meanwhile, German Foreign Minister Johann David said that lauded India as an innovative powerhouse and technology center. Earlier in his opening remarks, Dr. Jaishankar sought German support to deepen India's relationship with the EU and expedite the free trade agreement negotiations. Just on the last part on FTA, how is that going to be different with Germany now, since we've had no issues whatsoever with Germany, and Germany, of course, is an industrialized nation in the EU, now that this is a new area of realigning supply chains? Well, I think, now when we talk about the free trade agreement, with any European country, it has to be done through the European Union. So the FTA, the talks that are going on between the EU and India, there's a lot of progress has been made, but there's one issue on which there is a great deal of concern here in India, and that is their carbon border mechanism, carbon adjustment border mechanism,
which is a kind of a carbon tax. And that tax is on all metallic products which have carbon. And this is a very, this is a very heavy tax. This will affect industries which are trying to export products, especially engineering goods, any goods which have steel or iron. So this is something on which, that the talks are going to get stuck, because India is very concerned about it. On there is also a carbon tax which is imposed by the United Kingdom, but this was sidestepped in the Indo-UK FTA. There were no talks on carbon emission, on the carbon tax with the UK, but with the EU, I think they are going to do that, and that is going to be one kind of sticking area. But on a wide range of areas, there has been a sense of, or a spirit, I would say, of compromise on both sides. India is prepared to reduce the tariffs on things that they were concerned about, which was alcohol, as well as some, luxury automobiles and things like that. And the EU also is trying to give greater credence, greater importance to the area of movement of skilled professionals. We're heading for a short break, so please stay tuned on Market Mantra. Welcome back to Market Mantra. Prime Minister Narendra Modi today interacted with experts in the semiconductor field on the second day of Semicon India 2025 at Yashobhoomi in New Delhi. He visited the exhibition and saw various products and projects related to the semiconductor. Mr. Modi also participated in CEO's roundtable at the Semicon India this afternoon. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा लिखा गया एक लेख भी साझा किया, जिसमें भारत की परिवर्तनकारी सेमीकंडक्टर यात्रा पर प्रकाश डाला गया है। उन्होंने कहा कि सेमीकंडक्टर इंडिया समिट 2025 इसी यात्रा की निरंतरता का प्रतीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव के एक पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले दशक में देश संपूर्ण सेमीकंडक्टर श्रृंखला के लिए एक महत्वपूर्ण प्रतिस्पर्धी केंद्र के रूप में उभरने के लिए तैयार है। और नजर डाल लेते हैं एशियाई शेयर बाजार पर। एशियाई बाजारों में आमतौर पर गिरावट का दौर रहा। चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक 1.1%, जापान का निक्केई 0.9%, हांगकांग का हैंगसेंग 0.6% और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम सूचकांक 0.2% की गिरावट से बंद हुए। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.4% की बढ़त बनाने में कामयाब रहा। उधर यूरोपीय बाजारों के शुरुआती रुझानों में मजबूती दर्ज हुई। लंदन, जर्मनी और फ्रांस के शेयर सूचकांक 0.5% से 0.9% तक की बढ़त के दायरे में कारोबार करते नजर आए। Sushma, very briefly, there is a lot of geopolitics going on and deal making and strategic alliances, especially regarding trade deals and restoring their supply chains alternatively. Yes. Do you see that as a reason behind the uptick in the Asian and the European markets? Well, I think, yes, there is some kind of a sense of reassurance perhaps that is coming in the sense that there's a feeling that perhaps the United States is going to be negotiating with its partners and reaching some agreements. Even in the case of India, our Commerce Minister has said that it looks like a trade deal is coming up shortly by November. Let's have a look at the U.S. markets now. U.S. stocks ended on a negative note on Tuesday amid rising pressure from the bond market. The tech-heavy Nasdaq Composite Index lost over 0.8% to end at 21,280. The S&P 500 declined nearly 0.7% to close at 6,416. And the Dow Jones Industrial Average fell by more than 0.5% to end at 45,637. Pressure from the bond market. There's news coming in that the 10-year Treasury bonds of the United States Fed Reserve has actually been bought by the U.S. government itself. There are no external buyers like emerging markets, the central banks of India, China, or for that matter, Japan. How concerned is the U.S. right now? It is very concerning. I mean, the United States government itself buying these bonds to prop up the bonds market. It clearly shows that the policies, the economic policies of President Donald Trump are not having the results that he was expecting. Although people are saying that as of now, the impact of the tariffs is not being felt by consumers in American markets, but they will be felt in the coming weeks and the months ahead. And obviously, investors are now looking for other opportunities. There is a feeling that these policies are going to have a very damaging effect on the American economy. So the outlook is fairly, I should say, there's a lot of worry among major investors.
रूस ने अमरीकी दबाव के आगे भारत सरकार के न झुकने की सराहना की है। अमरीकी दबाव के बावजूद भारत रूस से कच्चा तेल और अन्य वस्तुओं को आयात कर रहा है। इससे पहले अगस्त में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ बैठक में श्री लावरोव ने वैश्विक परिदृश्य में भारत और रूस के सहयोग को बेहद महत्वपूर्ण बताया था। रूसी राष्ट्रपति की इस वर्ष भारत यात्रा प्रस्तावित है। Moving on to the crude oil market, crude oil prices dropped today. Brent crude was trading over 1.7% down at $67.97 per barrel, and WTI crude was also trading 1.9% down at $64.34 per barrel when reports last came in. Meanwhile, the market is focusing on a meeting of 8 members of OPEC and their allies scheduled later this week. When we talk about meetings, it's all about cutting supplies to increase prices in the open market, but now we are seeing that Russian oil flow would to some extent be offsetting this as well. How do you see the oil market for India? Well, of course, for India, the market is, the outlook is certainly very good because the prices are below $70. This is a price that we can afford. Plus, we are getting discounted crude, not just from Russia, but also other sources like Iraq, Iraq, Saudi Arabia. Everybody is giving discounts now to be competitive. And as far as the world market is concerned, prices will continue to go down because OPEC is not continuing its voluntary cuts. It's slowly unwinding these voluntary cuts. We're talking about commodities and price cuts, price increases in the bullion market. Now, in the Indian bullion market, 24-karat gold was trading over 0.5% up at 1,06,800 rupees per 10 grams. And silver was trading flat at 1,24,400 rupees per kilogram a short while ago. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अक्टूबर के वायदा कारोबार में सोना 0.5% की बढ़त से 1,06,341 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर रहा, जबकि चांदी मामूली बढ़त से 1,22,931 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर दर्ज हुई। सुषमा, बहुत संक्षेप में अगर वैश्विक बाजारों की बात करें तो सोने का जो भाव है तकरीबन $3,600 से भी ऊपर है। बिल्कुल। और चांदी भी $40 से ऊपर $41 को पार कर गई है। भारत में सोने और चांदी के प्रति जो ललक है वो स्वाभाविक है। बहुत संक्षेप में कितना उज्जवल भविष्य नजर आता है सोने चांदी? उज्जवल तो है। देखिए, आपने अभी बात की है वॉलेटिलिटी इन वर्ल्ड मार्केट्स, और गोल्ड सोना जो है वो सेफ हेवन एसेट है, और जितनी ज्यादा वॉलेटिलिटी होगी उतनी ज्यादा उसका दाम बढ़ेगा। और चांदी के बारे में ये कहना चाहूंगी कि इट इज बिकम सो इम्पोर्टेंट इन न्यू टेक्नोलॉजीज, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, एवरीथिंग। जी सुषमा, कार्यक्रम में आने और चर्चा के लिए धन्यवाद। और अब चलते चलते एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर एक बार फिर। Benchmark domestic indices rebound from the day's low. Sensex gains 410 points. Nifty closes above 24,700. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar holds talks with German Foreign Minister Johann David, highlights potential to double bilateral trade. And the 56th meeting of the GST Council begins in New Delhi. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra.